Alright guys, so आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है हमारे फर्स्ट सेशन के लिए and the first session of the topic would of the 1 week long bootcamp would be introduction to Python and that will be covered by me. So मेरे बारे में थोड़ा सा जान लीजिए. Myself third year Virat Chauhan and I'm currently the vice president of Nexus and हमारे सभी members ने मिलके ये bootcamp plan करा है आप सभी के लिए such that आपके समर ब्रेक्स में आपका कम से कम ये एक साल से आपके समर ब्रेक्स खत्म ना हो जाए ये सोच के कि आपने कुछ अचीव नहीं करा है. एंड आई रियली होप दैट दिस बूट कैम्प विल बी बेनिफिशियल टू एवरी वन ऑफ यू. एंड सो स्टार्टिंग ऑफ हमारे सेशन की इस सेशन की आइटनरी ये रहेगी. ऐसा 25-4 दिन में नहीं मिली. सबसे पहले हरलीन प्लीज मेक श्योर दैट और किसी का माइक म्यूट ना रहे, अनम्यूटेड ना रहे. सो या सबसे पहले हमारे 4 फेजेस में डिवाइड कर रखा है हमने ये सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी कवरिंग फीचर्स एंड यूसेज ऑफ पाइथन एंड उसके बाद हम मूव ऑन कर जाएंगे पाइथन टेक्निकलिटीज में और फिर पाइथन के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे. एंड चौथे में हम आप सबके बूट कैम्प के रिलेटेड डाउट्स को कवर करेंगे. इन केस आप बाद में ज्वाइन करते हैं या फिर अभी आपने थोड़ा सा मिस कर दिया हो, सो वी कैन कवर दैट लेटर ऑनवर्ड्स एज वेल. सो Python is basically you can kind of say it is a very versatile language and आप सबने सुना तो होगा whether it's AI or like web development, it is kind of popular nearly everywhere. But उसको इतना useful क्या बनाता है? So it has a bunch of features. So we can say first of all it is very easy to read and code in Python. Python being a very high level language, हम सबसे पहले उसके ऊपर उसके डेवलपमेंट प्रोसेस में ये सबसे पहले डिसाइड करा गया था कि द लैंग्वेज मस्ट बी अंडरस्टूड बाय एवरीवन. सो सबसे इजीली स्टार्ट करने के लिए लैंग्वेज अगर आप कंसिडर कर रहे हैं, सो देन यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद पाइथन एक्चुअली. एंड पाइथन इज एक्चुअली बोथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड काइंड ऑफ डोंट वरी इफ यू डोंट गेट इट राइट नाउ. व्हाट इट मीन्स इज बेसिकली पाइथन इज वेरी लाइक पाइथन काइंड ऑफ वर्सेटाइल है बहुत ज्यादा इसी चीज को लेकर. एंड इसी वजह से हम उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी कंसिडर करते हैं एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड भी कंसिडर करते हैं, जिसमें पाइथन हमारे फंक्शंस के ऊपर भी फोकस करता है एंड हमारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी फोकस करता है. अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा ये, बट वरी नॉट. नेक्स्ट अप, पाइथन इज सुपर एक्सप्रेसिव. सो पाइथन की एक लाइन ऑफ कोड में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं. And it is actually not a problem if you squeeze as much meaning as possible into one line. And next up, Python is dynamically typed. So in case आप Python में काम कर रहे हैं, so what this point basically means is कि आपको specifically Python का कोई भी data type specify नहीं करना होता है. And आप जैसे भी Python को रन करते हैं, Python के अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, तो उसका वो टाइप आप अपने वेरिएबल में जो भी वैल्यू का इनपुट करते हैं वो उसका डेटा टाइप खुद ही कंसीडर कर लेता है एंड वो खुद ही मैप कर लेता है पाइथन. नेक्स्ट अप, पाइथन इज ओपन सोर्स. सो व्हाट इज ओपन सोर्स एग्जैक्टली? ओपन सोर्स बेसिकली मींस इज दैट पाइथन का कोड सबके लिए ओपन टू एक्सेस है. सो व्हाट इट मींस इज यू कैन एक्चुअली जस्ट गूगल दिस स्टफ. इफ आई गो टू Python GitHub, so no, that would be the thing. So what you see here is basically Python का आप कुछ भी अगर खोलना चाहेंगे तो that is open to access to everyone. And इसमें आप अपने हिसाब से changes भी add कर सकते हैं. And this is really cool actually. Since आपको अगर कोई feature particular language में चाहिए तो then you can just start using it without any issues. And then moving on, I'll just actually इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि अभी मैं काफी टैब्स के बीच में सपोर्ट घूमता रहूंगा. नेक्स्ट अप वी हैव पाइथन में बहुत ज्यादा ह्यूज लाइब्रेरी सपोर्ट है. सो पाइथन बीइंग वेरी वर्सेटाइल, मैंने 3-4 बार ऑलरेडी कंसीडर कर आपको लाइक पॉइंट आउट कर दिया है. पाइथन इज सो वर्सेटाइल, बट व्हाट एग्जैक्टली मेक्स इट वर्सेटाइल इज दैट देयर इज अ ह्यूज लाइब्रेरी सपोर्ट बिहाइंड पाइथन. तो पाइथन में आपके पास बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं. सो सपोज आपको वेब स्क्रैपिंग का काम है, चाहे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है, चाहे आपको डेटा एनालिसिस का काम है, चाहे आपको वेब डेवलपमेंट का काम है, देन देयर इज एनी समथिंग फॉर एवरीवन हियर. एंड देन मूविंग ऑन टू द यूज केसेस,
अब पाइथन के यूज केसेस के बारे में बात करते हैं. I'm pretty sure everyone has heard of data science, so uh, I want to make sure there is like an equal level of understanding between all of us. तो उसके लिए मैं ये forward करना चाहूँगा कि data science is basically the field where we study data and we use data to like either make predictions or like kind of model like a kind of algorithm behind the data, and हम उसको large levels applications के लिए अंदर scale कर सकते हैं. And data analytics is basically you are visualizing data, you are working with data. तो अगर डेटा प्री प्रोसेसिंग का काम है, चाहे कुछ भी काम है, तो पाइथन इज काइंड ऑफ वेरी गुड फॉर दैट पर्पसेस आल्सो. अब वेब डेवलपमेंट में हमारे पास ऑलरेडी फ्रेमवर्क्स आते हैं. तो फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, वी विल गेट टू दैट लेटर ऑनवर्ड्स. बट बेसिकली व्हाट इट मींस इज आप अगर बैक एंड डेवलपमेंट के लिए कोई लैंग्वेज या सपोज किसी ने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के साथ काम करा है, तो फॉर बैक एंड डेवलपमेंट यू हैव Node.js, Express.js, but अगर आप Python में भी काम करना चाहते हैं, that is fine by anyone. And how you can achieve that is basically through Django and Flask. And that concludes our web development point. And उसके बाद हम अगर आते हैं AI ML में, तो actually Python is the biggest thing for artificial intelligence going on right now. And you can really not go wrong with choosing Python for artificial intelligence since it is the most dominant language for this. तो हम सोच रहे हैं इसके बारे में बाद में कवर करेंगे since we are just considering Python for now, क्योंकि we want to make sure there is आप लोगों को Python की समझ हो इससे पहले हम artificial intelligence related events के ऊपर move on कर सके. So this bootcamp was catered for that purpose. अब अगर हम साइंटिफिक कंप्यूटिंग के ऊपर आते हैं, तो अगर आपका इंटरेस्ट है रिसर्च की फील्ड में, देन इट इज काइंड ऑफ वेरी गुड फॉर दैट. आप फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स को सिमुलेट कर सकते हैं, एमुलेट कर सकते हैं, सिमुलेट कर सकते हैं with the help of Python. And then comes up automation and scripting. So automation and scripting, what it really means is कि you are kind of automating the tasks on browser. तो आपके पास इसके लिए कुछ लाइब्रेरीज होती हैं. तो उन लाइब्रेरीज का नाम यू कैन से यू हैव सेलेनियम, ब्यूटीफुल सूप 4, एंड आप वेब स्क्रैपिंग में भी इसको यूज कर सकते हैं. तो वेब स्क्रैपिंग में हम क्या करते हैं बेसिकली, वेब स्क्रैपिंग में हम वेबसाइट्स में जो डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसमें हम उसको अपने लोकली किसी फाइल में सेव कर लेते हैं. एंड हाउ दैट इज डन इज बेसिकली kind of very technical, so we will not be going into that either. Now game development, I'm sure एक दो लोगों को गुस्सा आया होगा यहाँ पर ये पॉइंट देख के, but it is kind of you can actually develop basic level games with this, and I will not say much further than this in fear of being hurt when I go outside. And next up we have finance and fintech. I don't think इस field को ज़्यादा focus करा जाता है, but I think it's a very good field to go with actually, since quantitative analysis is a very rewarding field in itself, and naturally आपका level बहुत high होना चाहिए, but if you want to consider a career in finance, you cannot really go wrong. And but इसमें एक consideration ये होती है कि companies really want skilled people in that aspect. तो then again, even in this field, Python comes up as a strong choice. And then we have cybersecurity. So cybersecurity may you can do a lots of stuff with Python. I'm sure there are a couple of people who are cybersecurity related here. But yeah, basically scripts बनाने में Python is kind of very much used. And then we have embedded system. Embedded systems में हम basically क्या करते हैं? Embedded systems में we can do create scripts for IoT and stuff. And then we have blockchains. Web3 का नाम सबने सुना होगा, I hope. Yes. Yeah. So what we can do here is basically हमारे पास libraries भी होती हैं for like Ethereum and Solana based. And मेरे को actually इसमें ज़्यादा experience नहीं है, but I do know one thing is that हम blockchains के ऊपर काम कर सकते हैं Python के through. Now that's a lot of theory and understandably शायद overload हो गया होगा, so I apologize for that. And now it's coding time. So in case किसी को Python नहीं आती है, तो what we can do here is I will just
cover Python in like 5 to 10 minutes, and that won't be a lot of work. और still हम बस basic familiarity develop कर रहे हैं इस language के साथ, and I think that would be useful in that. But before that, does anyone have any doubts? They can type it in the chat box or whatever, and they can also converse here if they want to. Sure, go ahead. कोई बंदा एक बार मेरे को डाउट कन्वे कर देगा? Okay, so how is Python different from R? So, okay, good question actually. I've worked with R, not a lot of experience there, but still that can translate maybe into answering your query. So, in R you have your R language is specifically catered towards data analysis actually, and there is like kind of, अगर आप सिर्फ डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस की बात कर रहे हैं, देन आर इज वेरी गुड ऑप्शन. बट देन अगेन हमारी इंडस्ट्री की चॉइस की बात आ जाती है. So it's not like there is only one good language. You have alternatives for one language in every other field. So it's not, it is never going to be true that ki ek language is superior to every other language. So in that case हम बस ये बोलेंगे कि इंडस्ट्री का शेयर के ऊपर डिपेंड करता है. So suppose there is actually I think a more dominant need for Python than compared to R. So I think if I had to, अगर मैं अपने दिमाग से बोलूँ तो वो रेशियो होगा 70 for Python and like 30 for R actually. So R is a good thing. It is a very niche use case, but not a lot of, but not by a lot. And if you think you should go with R, then definitely go for it. There is actually a need for R developers since not everyone knows of it. And I hope that answered your query. Okay. So moving on to coding part. Okay. ये थोड़ा सा सिंपल बना देते हैं. ओके. सो यहाँ पे मैं एक बेसिक स्क्रिप्ट बनाऊंगा एंड ओके. सो सपोज आपको कुछ हेलो प्रिंट करना है. सो इट रियली टेक्स ओनली वन लाइन ऑफ कोड. आई एम श्योर सबको पता ही होगा, बट hey, it's not a problem I think. Okay, so it is working well. Apparently you can just use one line to print hello, and as you will get further in the bootcamp, you will see that Python ka syntax really makes much more sense than uh, other languages. Although as you get more and more experienced, I don't think really syntax aapko itna bother karega in your later stages of career. But anyways, so let's do one thing. I will just create a code for like that prints hello like 10 to 20 times, and yeah, let's go. So first of all, I will just define a function. So I hope most of the people here knows what a function is, but if you don't know, that's not a problem. We will be covering that separately. So ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया है, एंड व्हाट इट बेसिकली डज इज कि मैं एक इंटीजर वैल्यू पास कर रहा हूँ n, एंड मैं जितनी भी बार n पास करूंगा उसे, सो इट विल जस्ट प्रिंट आउट हेलो फॉर दैट मेनी टाइम्स. सो अब मैं एक मेन फंक्शन अगर डिफाइन करता हूँ, देन okay, I'm just passing 50, so I think it should print 50
times. Okay, so यहाँ पर मैंने क्या करा है basically, your order really does not matter here, but what I'm doing here is basically मैंने main function में main function is kind of a thing, एक recurring pattern होगा ये आप languages में आगे जाओगे तो what it basically means is कि मेरा सारा काम यहाँ पर होगा. So suppose I have more than one function, तो I can call that from the main right here. या ऊपर मेरे फंक्शन की डेफिनेशंस होंगी, मैंने फंक्शन को बताया है कि फंक्शन क्या करेगा. एंड व्हेन यू आर क्रिएटिंग फंक्शंस मेक श्योर कि actually I'm not covering functions, so let's just see if we can get through this, and hopefully it should run in the first go, otherwise embarrassment हो जाएगी आप सभी के सामने. Okay, right, kind of a psychopathic output, but I'm sure that was what we were going for. तो yeah, ऐसे ही आप पाइथन के साथ काम कर सकते हैं. एंड इफ यू वांट टू इंपोर्ट लाइब्रेरीज एंड स्टफ देन यू कैन आल्सो डू सो. एंड suppose okay, we can cover libraries later. I think I'll make sure there is scope for that later onwards. But yeah, Python के साथ अगर आपको काम करना है then it is really easy. Just go to just get VS Code and you can just literally type download Python, and yeah, that's the first website that shows up. Just download the latest version and get started. So that concludes our coding time. Now getting to the next slide, we have frameworks and libraries. And what frameworks do is basically they are हमने basically frameworks में ये करना होता है कि frameworks already लोगों ने बनाए हुए होते हैं, and they are like kind of specialized libraries जिनके साथ हम काम कर सकते हैं, and वो हमारा काम आसान करती हैं basically. और they are libraries से थोड़े से ज़्यादा better specialized होते हैं ये, and they also offer more features. But libraries क्या होती हैं इधर उसके ऊपर भी आते हैं. पहले frameworks cover करते हैं. Django is basically your framework for server backend development, and Flask is kind of the same, but Django हमारा is kind of more specialized for this purpose than this. And ये आपको Django आपको ज़्यादा options देगा Flask के ऊपर, but ज़्यादा cover नहीं करूँगा in case आप लोगों को overload हो जाएगा. Then next up we have Fast API. So Fast API is basically आपके APIs में use होता है, as the name contains API. Now API क्या होती है, आपके पास suppose आपका system है जो आपके घर पे है, and अगर आप एक API को call कर रहे हैं, so API, what an API is basically working as a waiter. You're requesting some stuff from the server, and the server then gets your order and he returns what you ordered for to back to your client computer. So kind of restaurant imagine करिए, आपने वेटर को ऑर्डर करा है एंड वो किचन में जाता है एंड वो किचन में अपना लिस्ट पकड़ा देता है एंड वहां से आपका खाना आपको वापस वेटर के थ्रू आ जाता है. So moving on, we have TensorFlow and PyTorch. TensorFlow and PyTorch are the most extensively used libraries in artificial intelligence actually, and TensorFlow was actually quite superior, used to be quite superior in the early days of artificial intelligence, but जैसे जैसे time आता जा रहा है, most of the research moved on to PyTorch actually. So अगर आप लोग सोच रहे हैं, like if you want to get started with artificial intelligence, like the deep learning stuff actually, not just the artificial intelligence, but if you want to move on to deep learning frameworks, then libraries, then you really cannot go wrong with PyTorch. And since that's not a deep learning session, we can maybe like cover it later onwards अगर आप लोगों को interest आता है इसमें काफी. But then next up we have Pillow. Now Pillow is basically आपकी एक image processing library है ये. And image processing का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है कि आप images को input की तरह दे सकते हैं. Just a second. Yeah. You can basically provide images as input to another function, and वो उसको process करता है basically. So it's just an image processing library. And then moving on, we have OpenCV.
Now, what the CV in OpenCV stands for is basically computer vision. Computer vision हमारी वो field होती है जहाँ पर हम like मीडिया के साथ काम करते हैं, and like it's kind of yeah, आप फोटोज ऑडियोज लाइक एंड फोटोज एंड वीडियोज के साथ काम करते हैं कंप्यूटर विजन में. एंड सपोज वी हैव ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एल्गोरिथम्स, तो सारे एल्गोरिथम्स स्टेट ऑफ द आर्ट एल्गोरिथम्स आपको ओपन सीवी में मिल जाएंगे. एंड आपके जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे कंप्यूटर विजन में आगे जाके, सो ओपन सीवी इज गोइंग टू बी लाइक प्रूविंग क्वाइट important in that aspect in the future. Now, then we have Selenium, and Selenium is kind of love-hate relationship for me. आपको मैंने जैसे बताया था आगे जाके कि हम वेब स्क्रैपिंग करते हैं एंड हम ऑटोमेशन करते हैं. सो सेलिनियम इज व्हाट इज काइंड ऑफ यूज्ड फॉर दैट पर्पसेस. मेरी पहली इंटर्नशिप में मैंने सेलिनियम के साथ ही काम करा था एक्सटेंसिवली, एंड आई एम नॉट श्योर आई वांट टू गो बैक टू दैट सिचुएशन अगेन, बट या ओके, वी ऑल हैव आवर फेवरेट्स एंड non-favorites. And then we have F Society. It is kind of used in cybersecurity, not kind of, actually it is just used in cybersecurity, and हमारे penetration testing में काम आता है ये. इससे ज़्यादा बोलूँगा तो मैं कुछ गलत हो जाऊँगा, और I'm sure यहाँ के cyber के बंदे मेरे पीछे पड़ जाएंगे. But anyways, that covers our frameworks and libraries, and I see we have maybe a message here, and never mind. Okay. So that covers the frameworks and libraries. And if anyone has any question midway through the session, please feel free to like just ask up. And I really don't mind. आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं. And please like don't be afraid to ask actually. So projects. Actually projects के नाम पे what I would like to begin with is आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी हो, सो देयर इज नॉट रियली सबसे आसान तरीका किसी भी लैंग्वेज को सीखने का हो जाता है प्रोजेक्ट्स के थ्रू बनाना. आई एम श्योर आप सब कुछ लोगों को पता होगा प्रोजेक्ट्स कैसे बनाते हैं, और नहीं भी बनाते दैट इज फाइन, यू कैन जस्ट गूगल ऑन यूट्यूब एंड गेट स्टार्टेड. एंड एक्चुअली आई हैड प्रिपेयर्ड 2 प्रोजेक्ट्स. सो मेरे पाइथन का सबसे पहला प्रोजेक्ट काइंड ऑफ स्टूपिड ही था, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू एम्बैरस माई सेल्फ हियर टुडे. सो या ओके, मैंने 2022 में आई सपोज काम करना शुरू करा था पाइथन के साथ, एंड वन ऑफ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट्स इन पाइथन वाज बेसिकली अ प्लैनेट सिमुलेटर. एंड I don't want to get too much into the details of that, but anyways, okay, so this was my code base, and मैंने कुछ नहीं करा था. एस्ट्रॉइड बेल्ट से पहले वाले प्लैनेट्स को बेसिकली ड्रॉ करके उनको घुमा दिया था एक डॉट के थ्रू, एंड आई काइंड ऑफ कॉल्ड इट अ प्लैनेट सिमुलेटर. मैंने प्लान करा था और प्लैनेट्स ऐड करने का, बट क्लियरली मेरे पास टाइम नहीं मिला उसके बाद. बट एनीवेज, इसको रन करके देखते हैं. ओके, मार्वेलस. सो या यहाँ पर ये शायद मेरी अटेम्प्ट थी मरकरी बनाने की, देन वीनस, देन फॉलोड बाय अर्थ, एंड या ओके, दैट्स सपोज्ड टू बी मार्स. So yeah, that was one of my projects. But actually, the point I'm trying to make is that no matter how stupid your idea is, build something that you are actually interested in. So whether it is a very like small thing such as to-do list, that is perfectly fine. Whether it is the next game-changing thing, whether it is a new app which will like just change the world, it is perfectly fine. It is okay to like just start working on whatever project you want to. And actually एक और प्रोजेक्ट था जो मेरे करंट लेवल को ज़्यादा अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट कर पाएगा, but I'm facing some issues here. So I'm actually working with natural language processing since the last couple of months, and yeah, so I had this project built here, but apparently इस ऐप को आज ही नहीं चलना था. So kind of a bummer. But yeah, so I was talking about frameworks earlier. Now आगे जाके अगर आपने AI के साथ काम कर रहा है, then I'm sure you guys must have used ChatGPT or Claude or Perplexity or whatever AI tool in the future. But
like in the past, but so yeah, what we do in NLP is basically kind of work with large language models. अभी एक लेटेस्ट मॉडल भी निकला है मेटा की तरफ से लामा 3 में, Llama 3 series में, and it is kind of very good. But yeah, that is what I'm working with actually, and it was supposed to run today, but आज थोड़ा धोखा दे दिया इसने मुझे. So yeah, anyways, so that will be it for the project section. And good practices. So it's not just limited to Python. The 4 things that are written here, अगर आप इन चारों चीजों को follow करके चलते हैं, then it would just help you out in the future, in the long run, a lot. So yeah, starting up with the first thing, we have read documentation. Now, what is documentation? अगर आप Python में कुछ भी काम करते हैं, and it's not just limited to Python again, आप कुछ भी चीज करते हैं, अगर आप कोई भी लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, चाहे इट इज C++, चाहे इट इज Python, चाहे इट इज JavaScript, और even your HTML, CSS, Tailwind and Bootstrap frameworks, तो हर चीज की डॉक्यूमेंटेशन एग्जिस्ट करती है. नाउ डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है एग्जैक्टली? डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली आपको यूज करना सिखाती है एक लैंग्वेज. सो अगर आप यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं टू लर्न अ लैंग्वेज, दैट इज परफेक्टली फाइन. एक 6 घंटे सबसे बढ़िया तरीका काइंड ऑफ सीखने का यही है, 4-5 घंटे का क्रैश कोर्स देखिए एंड जस्ट स्टार्ट बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स and you will get quickly familiar with the language itself. Now, documentation is kind of the same thing which these YouTubers are learning from, and they are then teaching you the same thing in their own terms. So अगर आप documentation को पढ़ने की आदत बना देते हैं, so that will prove to be a very good practice in the future. क्योंकि आप अपने दिमाग को फोर्स कर रहे हैं चीजें समझने को, एंड आगे जाके भी अगर आप जॉब्स में काम करेंगे, आप इंटर्नशिप्स वगैरह में काम करेंगे, तो यू विल बी एक्सपेक्टेड टू रीड दिस डॉक्यूमेंटेशन एंड देन जस्ट स्टार्ट creating software or programs that are asked to be created. And yeah, so that is that. अगर हम अगेन हम PyTorch वाले एग्जांपल की बात करते हैं, अगर हम हर लाइब्रेरी, हर लैंग्वेज और हर फ्रेमवर्क की डॉक्यूमेंटेशन एग्जिस्ट करती है, एंड उसमें बहुत कुछ दे रखा होता है. सो यू विल बी लाइक एक्सपेक्टेड टू लर्न, यू विल बाय द एंड ऑफ इट यू विल लर्न अ लॉट हियर एक्चुअली. सो कॉम्प्लेक्स लगेगा शुरुआत में, but with given enough time, if you keep trying, then you will end up learning a lot of stuff along the way. And the second point is kind of obvious here, but learn how to Google. Now Google करना सब जानते हैं, but how to Google effectively is kind of a skill. So वो स्किल मैं दे तो नहीं सकता हूँ, बट इफ यू कीप इट इन माइंड, आपकी 99% प्रॉब्लम्स, या इवन लेट्स जस्ट गो विद 95% एक्चुअली, आपकी 95% ऑफ द प्रॉब्लम्स आप इंटरनेट पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर चुकी हैं. एंड एक्चुअली नेवर माइंड, आई एम जस्ट मूविंग इट टू 99%, क्योंकि आपने जो भी प्रॉब्लम्स फेस करी डेवलपमेंट प्रोसेस में, वो ऑलरेडी लोग पहले भी फेस कर चुके हैं. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट आस्क थिंग्स ऑन द इंटरनेट टू रैंडम स्ट्रेंजर्स, एंड उन स्ट्रेंजर्स के आंसर्स आपको आगे जाके हेल्प कर देते हैं. सो अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, देन just keep looking. There is no time to get demotivated, and there are actually quite good websites such as Stack Overflow or like GitHub, तो उस पे भी आप सर्च कर सकते हैं. And then we have the third point, which is basically don't get stuck in tutorial hell. Now, what is tutorial hell? Tutorial hell is kind of what I say, not just me actually, it is a term in the industry. So आपको projects बनाने हैं, that's cool, and you see like, but before that you see you feel like आपको लग रहा है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले मुझे ये चीज आ जानी चाहिए, तो उस चीज का आप वीडियो देखते हैं. एंड देन यू सी कि यूट्यूबर एंड में बोलता है कि मेरा ये टॉपिक के ऊपर भी वीडियो देख लो. देन यू मूव ऑन टू दैट, एंड देन वो अपनी एक प्लेलिस्ट घुसा देता है जो बोलता है उसके बाद आप पाइथन के मास्टर बन जाएंगे, तो आप उसको भी करने लग जाते हैं. तो इन द एंड यू व्हाट आई बेसिकली मीन इज यू आर काइंड ऑफ स्टक इन अ लूप,
एंड उस लूप से बाहर निकलना आसान नहीं होता, एंड बाय द एंड ऑफ इट यू जस्ट गेट बोर्ड, एंड आपकी जो मोटिवेशन होती है प्रोजेक्ट बनाने की, इट काइंड ऑफ डाइज आउट. सो डोंट गेट इनटू दैट, एंड इट शुड नॉट हैपन. So what I basically mean is, if you feel like you want to build a project, then just go ahead and do it. And don't really watch a lot of videos. Like most of the time, आप आगे जाके काम करेंगे तो आपके जो specific issues होंगे development process में, तो आपको उसकी videos नहीं मिलेंगे. So just make a good habit of that. Good habit of like figuring out the solution on your own. Just Google stuff, read the documentation, and like see if the same previous people have had the same doubts. And अगर कोई conceptual issue पड़ता है, then just go to YouTube. But like for a particular topic itself, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि आप अपनी उसकी प्लेलिस्ट करने लग जाएंगे, क्योंकि अपेरेंटली ही हैज प्रॉमिस्ड कि आपको पाइथन का मास्टर बना के छोड़ देगा वो, या फिर किसी और लैंग्वेज का भी. So yeah, next moving on, push yourself outside your comfort zone every day. Now, okay, so ये थोड़ा सा deep point हो जाता है. अब deep कैसे हो जाता है? You see people in your class, and like आपकी क्लास में, चाहे आपके आसपास या कहीं भी हो, चाहे आपके स्कूल में थे पहले, so there is always someone better mostly. एंड मे बी यू आर द टाइप ऑफ पर्सन कि आप उसको देख के मोटिवेट हो जाएंगे कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ. बट या शायद आप नहीं होंगे, एंड यू जस्ट फील लाइक मैं तो कैचअप नहीं कर पाऊंगा इस इंसान से. बट द पॉइंट इज दैट पर्सन हैज नॉट gotten where he is or she is by the birth. What they basically did is basically they push themselves outside their comfort zone every day. So इसका मतलब क्या हो जाता है कि just always keep learning new technologies. Like अगर आप second year में हैं, that's very cool. Then you have like plenty of time to figure out what you want to do. And ये साल अगर आप ये सेमेस्टर भी एक्चुअली फिगर आउट करने में लगा देते हैं, तो कि आपको क्या करना है आगे जाके, आपको क्या टेक्नोलॉजीज के साथ काम करना है, तो दैट इज नॉट अ वेस्ट एट ऑल. क्योंकि आप actually it is much better than just ending up with a job you don't like, with a technology or work आपको एक टेक्नोलॉजी मिल गई, आपको एक शायद इंटर्नशिप भी मिल जाएगी एक साल बाद, बट बाद में रियलाइज होता है कि इट इज नॉट व्हाट यू वांट टू डू. मेरे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि आई वाज काइंड ऑफ लकी टू फिगर आउट कि मेरे को पता था कि शायद आई विल बी वर्किंग विद एआई, बट अपेरेंटली वहां पे फिर चैट जीपीटी का बूम आ गया, एंड नाउ एवरीवन वांट्स टू डू एआई. But that's my own personal perspective, and that is actually quite well too, since AI is getting a lot of observations, like a lot of funding, and like पैसा भरा ही जा रहा है इस फील्ड में, and that means a lot of opportunities pop up every day, whether they are in India, whether they are abroad, that does not matter. But yeah, if you want to do AI, then just try out AI, just try building a project, and just don't get stuck actually. स्टक होने का मतलब क्या हो जाता है कि एनालिसिस पैरालिसिस नहीं होना चाहिए, कि पहले आप एक ट्राई करते हैं कि आप बेस्ट रिसोर्सेज गैदर करेंगे किसी चीज को पढ़ने से पहले, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए. Like I said, if you are in third year, if you are in second year, then you have plenty of time to figure out. Just give this semester, like this third semester, to yourself to figure out what you want to do, and then just start working on it like in the even semester. And जो third year में है, and then you guys definitely don't have the time. Uh, and I don't mean it in a negative way actually. What I meant by like you don't have time is basically you should not get stuck into thinking कि अब क्या करना है, अब तो नहीं होगा. Just start working. Everyone is working and you should do the same. So I hope that makes sense actually. I'm not sure it did. It kind of made more sense in my head. Now आज जो बता रहा हूँ, आई एम अगर like if you guys request enough, I will just make the PPT available after the session to everyone. And what I expect is basically मैंने आज जो भी बोला है, अगर उसका 5% भी you guys have like captured in your head, then that's plenty for me. I'm sure आप सबका 100% retention तो नहीं जा रहा होगा यहाँ पे, and that is perfectly okay. It does not matter a lot. But yeah, I think that was the end of my like today's session actually, and we'll be covering the bootcamp part.
So अगर किसी को और भी doubts है, then they can just ask up whether it's just Python related, whether it is not Python related, whether it is any kind of doubt, they can just ask. I mean, it has to be programming related. Actually, I will not be giving life advice here. So किसी को कोई भी issue हो, they can just ask me right now, and we will make sure कि आप सबको engaging and welcoming रहे आपका आज आपको throughout पूरा bootcamp का process. So yeah. Virat, I was about to say, please check the chat box. Okay, okay. Oh, यार कोई ना फिर बता दिया करो मुझे अगर chats में question आते हैं तो. Okay. Harjas again, good question. How is PyTorch better? PyTorch is actually not okay. So starting off, PyTorch is better because it is what people are using in research, and what this means is basically आप रिसर्च में अगर देखते हैं तो रिसर्च में बेसिकली ये वही लोग होते हैं जो फ्रॉम द स्क्रैच मॉडल के आर्किटेक्चर्स डिजाइन करते हैं. सो अगर आपके पास चैट जीपीटी है ऑन वन हैंड, एंड देन यू हैव मेटा एआई ऑन द अदर हैंड, व्हिच इज बेसिकली लामा. सो जीपीटी और अगर लामा के बीच में आप कंपैरिजन करेंगे तो यू विल फाइंड आउट दे आर फॉलोइंग डिफरेंट आर्किटेक्चर्स, and it's not like there is one architecture which is superior to any particular architecture. But what it basically means is scientists are working 24/7 on like creating improvements to the large language models, and उस चीज में they have found out कि ज्यादातर लोग PyTorch bet use कर रहे हैं. So अगर आप रेशियो की बात करेंगे, again off the top of my head it is 80-20 actually. TensorFlow used to be quite prominent back in the days, but PyTorch is now used extensively, and yeah, whether it comes to LangChain or Llama Index, they are mostly using PyTorch at the back end when they have to. So I hope that answered your one question. And now, okay, thank you, Brahmdeep. And then we have Dhairyajit's question: which library is better for NLP? Again, that comes up. Okay, NLTK or space. Okay. So again, ये question वही हो जाता है कि okay, again, question वही yeah, okay. I'll just reiterate or just answer wala point. What I meant to say is कि people tend to prefer what is being used in the research क्योंकि that is the cutting edge. So अगर आपको latest updates चाहिए तो PyTorch is the thing. But anyways, धैर्यजीत asked NLP के लिए क्या better है. Okay, again वही बात हो जाती है कि what is best for your use case scenario actually. So whether it is NLTK or Spacey, it is up to you. I tend to use NLTK more because मेरे को पहले introduction इससे हुआ था, and I feel like NLTK is better, but I don't think there is one particular. Again, मैं अपने point को reiterate करता हूँ अपने लिए कि there is no one particular library which is superior. It is just that it is more catered towards one use case. क्योंकि अगर एक ही library particularly better होगी, then clearly सिर्फ वही exist करेगी. But again, all the libraries exist करती है, that means they are being used even now. So again, that means you just have to find out which is best for your use case scenario. And if you can't find one, then there is obviously 50-50 split in your opinions. So just start working. And also, if someone wants to start with large language models, which approach should one use to get started with it? Again, good question. And it is मेरे को ये figure out करने में काफी time लग गया था. So I hope that experience of mine could be helpful to you. So उस चीज के लिए what we can do is you have Coursera courses, you have Andrew Ng's deep learning specialization. So get started on that. You can just actually DM me after the session. I will make sure I will provide the links to you. And if you get like actually Coursera pe you have option to like either purchase the course or audit the course. Auditing the course is totally free. You won't get a certificate for it, but you have access to all the videos. And I'm sure जो quizzes वगैरह पूछते हैं वो आपको GitHub वगैरह पे मिल जाएंगे, labs वगैरह. But yeah, if you can get the course, that is perfectly great. But there is really a lot of resources here. So अगर कोई पूछेगा कि कैसे start करना है, तो make a foundation in deep learning. उसके बिना काम नहीं होगा. उसके बिना you are just dabbling in generative art AI.
और वो चीज फिर दे really don't translate well to your skill set during interviews, क्योंकि interviews में they expect you to have a proper grasp on the like model architecture, and जो questions पूछेंगे वो classical machine learning से भी पूछेंगे, although कम पूछते हैं. Like you have scikit-learn को किसी को around 10 to 15 years ago it used to be used a lot, and Kaggle competitions वगैरह में भी scikit-learn he used to be the prominent library, but then that got replaced by neural networks as they started to get better and better. And then altogether LLMs are gaye hain, and even in Kaggle competitions you have PyTorch and LangChain and Llama Index, but frameworks dominating the competitions. So अगर resources की बात है तो yeah, again deep learning specialization के ऊपर काम करो, and then just move on to the LLM course. And yeah, again वो coursera पे available हो जाएगा एंट्री के लिए. That those courses are really good. वरना there are books for that. I can provide send you guys the book if you want to. But yeah, I hope that was kind of helpful. I'm not sure I've answered that well, but okay. Prachi Sharma का question है, as a freshie to programming and coding, how one should start. Okay. Again ये I think लगता है कि जब when you don't know coding and programming a lot, लगता है कि कैसे start करना है, but it is really not very difficult. सबसे पहले start करो hello world print करके, and then move to loops. Like अभी आपका basically हमारा boot camp का main objective ये है कि आपको एक foundation provide कर सके कि आप कम से कम इस boot camp के end तक आप इतना कुछ तो सीख ले कि आप इसके बाद अपने हिसाब से projects बना सके, अपने हिसाब से Google वगैरह कर सके, and you can just find out stuff on your way. तो basically प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कुछ कंस्ट्रक्ट्स होते हैं बेसिक, तो उसके साथ फेमिलियरिटी मेंटेन कर लीजिए. सो अगर मैंने एक सेकेंड, आई थिंक आई माइट हैव द सिलेबस हियर. ओके, आई एम सॉरी द क्वालिटी इज वेरी बैड हियर, but yeah, next up in the next session we will have Harleen covering data structures in Python. So what are data structures, how they are created, that will be covered by Harleen. And those are the kind, and then you have control flow statements which are basically loops, and then you have Python functions. And जैसे मैंने अभी print hello का function बनाया था, so that was one of your function. And then you have file handling, and file handling really lets you work with files outside of your code. So that kind of opens like वो थोड़ा सा हमारा perspective खोल देता है, तो उस चीज के लिए इट इज वेरी गुड. एंड अगर आपका कोड आप बना रहे हैं, देन यू हैव टू मेक श्योर कि आपका कोड जैसे आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, आपके दिमाग के हिसाब से परफॉर्म कर रहा है, जैसे आप उसको इंटेंड करते हैं. तो देन यू हैव एक्सेप्शन हैंडलिंग व्हिच विल बी कवर्ड बाय श्रेयस. पर्सनली स्पीकिंग, आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइक Pulkit's and Chirag session a lot. And actually I'm not even okay, that's kind of favoritism at play here. All of our sessions are going to be really good. एंड आई होप आप इसके बाद आपका जो क्वेश्चन होगा वो और ज्यादा एडवांस होगा. सो व्हाट आई बेसिकली मेंट इज लैंग्वेजेस के बेसिक कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, तो गेट फेमिलियर विद दोस एंड देन जस्ट स्टार्ट बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स. दैट इज द ओनली वे. एंड सिर्फ पाइथन के साथ ही काम मत करो, उसके बाहर की जो लाइब्रेरीज हैं, उसके बाहर के जो फ्रेमवर्क्स है, लाइक आई सेड Django for the back end, and like Flask for the back end, Fast API, and then you have libraries like PyTorch and Selenium or whatever. Just start working on projects. सोचो कि आपको क्या बनाना है, जो like which kind of interests you. Suppose आपको अपने कॉलेज की वेबसाइट में इम्प्रूवमेंट डालनी है, then you can just start working on the web development and like बात कर लीजिए टीचर्स वगैरह से if they want to push your changes. And like कुछ भी, अगर आपके घर पे बिजनेस है मम्मी पापा का and you want to make a website for them, then go ahead. And if you want to make a predictive model for your own use cases, like for like deep learning models for your own uses, then you can build that. Just build what you want to make actually, and don't think too much about it, is kind of my response here. I hope that was helpful again. So yeah, any more doubts? And actually yeah, so we can just move on to the bootcamp part, and if anyone has a doubt even now and like later onwards, they can just put it inside the chat and I will answer as soon as I get back to you. So that was the technical part of the session. And now since ये पहला session है,
तो इट इज काइंड ऑफ माई ड्यूटी कि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूँ बूट कैंप के बारे में. एंड अबाउट द बूट कैंप इज बेसिकली हमारी एक्सपेक्टेशन आपसे या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन हमसे क्या रहेगी कि हम एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू गेट अ AI boot camp going ongoing, and after extensive discussion with our teachers and mentors, and thankfully उन्होंने हमें एडवाइस करा कि एक्चुअली बेसिक्स के ऊपर ज्यादा काम करना चाहिए. एंड एज सच वी हैव क्रिएटेड अ बूट कैंप जहाँ पे आपके बेसिक्स के ऊपर काम कर सकते हैं हम. एंड हमारी एक्सपेक्टेशन आपसे बस ये रहेगी कि आप इसके बाद एक लैंग्वेज पे थोड़ी बहुत सी बेसिक पकड़ बना सके, जिसके बाद आप अपने हिसाब से प्रोजेक्ट्स बना सके, चाहे आप यूट्यूब से देख के बनाए, चाहे आप गिटहब से देख के बनाए. एंड नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ काम कर सके बेसिकली. एंड एज फॉर द रिवॉर्ड्स, बेसिकली ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, हमारे टॉप 10 परफॉर्मर्स को हम सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन देंगे. सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन विल बी सप्लाइड टू एवरी वन ऑफ यू. And basically what we have is basically कि top 10 participants को हम सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन देंगे. उसके बाद जो टॉप 3 पार्टिसिपेंट्स होंगे जो सबसे ज्यादा स्कोर हाई करेंगे हमारे स्कोर बोर्ड में, तो दे विल डायरेक्टली गेट एंट्री टू अवर टेक टीम. एंड एक्चुअली हमने पिछले सेमेस्टर के लाइक खत्म होने से 1-2 महीने पहले ही हमारी टेक टीम बनाई थी. सो स्टूडेंट्स वर बिजी विद देयर लाइक सेकंड मिड टर्म्स एंड एंड टर्म्स. सो अभी हमने ज्यादा काम करना शुरू नहीं करा है. सो दैट मेक्स इट प्राइम अपॉर्चुनिटी टू जॉइन अवर टेक टीम. एंड वहां पर हम बेसिकली आपके ऊपर ज्यादा फोकस कर पाएंगे. एंड yeah, basically we'll be providing you resources. We'll be expecting you guys to form teams to create projects in deep learning or like machine learning. So yeah, that is that. For the top 3 performers, they will be directly invited to Team Nexus and the technical team, and they will also get the certificates of excellence. इसके बाद क्या नेक्स्ट है? इसके बाद अगर हमें इस बूट कैंप के एंड तक रिटेंशन रेट काफी अच्छा रहा और लाइक आपसे रिस्पॉन्सेज अच्छे आते रहे, तो we plan to do more bootcamp series in the upcoming future, and that is what we planned on कि एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि कॉलेज में हम we are providing students what they want properly or not. हम भी पहली बार बूट कैंप करवा रहे हैं, so naturally there will be lot of mistakes made on the way. And उसी के लिए for each session we will be providing you guys with a feedback form. So अगर आपको हमारे किसी भी मेंटोर के पढ़ाने में दिक्कत हो, चाहे आप इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करना चाह रहे हो, चाहे आपको कुछ भी इशू हो with a particular session, you can just fill in the form. And like if you want to provide us guys encouragement, then you're also feel you guys are actually free to do so also. हमें अच्छा लगेगा अगर आप encouragements provide करेंगे ज्यादा. But yeah, that is the plan. We will maybe like Python के बाद maybe we will have a like classical AI learning series for the bootcamp part for this college students itself. And EAC bootcamp is only open to GTBIT students, and so we are really trying to make sure कि आप सबका level enhance कर सके on a collective level. And regardless of what anyone says, what we really want to do with this society is कि आप सभी को अगर 5% improvement भी offer कर सके, तो that will be our success actually. It is purely made for you guys, this society. And yeah, moving on, we have evaluation. So हम आपको evaluate कैसे करेंगे? Okay, for today's session हम आज कोई quiz नहीं रख रहे हैं, but in the upcoming sessions we will have quizzes. And वो quizzes क्या होंगे कि suppose आपने पूरा session attend करा है, so we'll be expecting you guys to answer questions from based on that particular day's session itself. तो जैसे suppose next session would be data structures, so the next the quiz link will be supplied after like just 10 minutes before the session ends. हम 5 मिनट रुकेंगे ताकि आप सब लोग quiz भर सकें. And उसके बाद we will just get your guys score on that based on like the quiz. And हर दिन आपके quizzes के scores evaluate होंगे and वो final tally sheet में लग जाएंगे. And by the end of the boot camp we will have 2 projects. Like we will have you guys make a project based on what you have learned here. आपने क्या सीखा है यहाँ पर, उसके हिसाब से आपसे एक project बनवाएंगे. And we will disclose that later onwards actually. So yeah,
आपको बेसिकली उन आपके क्विज कोर्स की बेसिस पे एंड आपके प्रोजेक्ट के एफर्ट्स के ऊपर evaluate करा जाएगा, and we will not be disclosing anything so far. So yeah. Virat, there is a message in chat box. Just read that out for me early. What is the main use of NumPy and Panda in Python? Okay, किसने पूछा ये? Christine. Okay, Christine. Okay, good question, Christine. NumPy and Pandas हमारे basically data analytics and like data science का like काम में use होते हैं. Like NumPy basically हमें arrays बनाने देता है, and it offers more freedom over arrays than the ones offered by Python. तो Python में lists बनती हैं, not arrays, and NumPy में हम arrays बनाते हैं जो faster performing होती हैं Python से, and थोड़ा सा freedom restrict हो जाता है उनसे, but like they are very good. But moving on to pandas, what we have is हम उससे files read करते हैं, and then we have Excel sheet suppose. तो उन Excel sheet को हम plot कर सकते हैं, and then we can find out the missing columns and basically perform like data pre-processing on that data set, like जो भी Excel की sheet है, जो भी आपका data set है. क्लासिकल मशीन लर्निंग में यूज होता है बेसिकली, और डेटा एनालिटिक्स में यूज होता है आपके नंपाई और पांडास. और जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे, इट इज अ वेरी गुड थिंग टू लाइक गेट स्टार्टेड विद. और इसके साथ साथ आप मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न भी चेकआउट कर सकते हैं इसके बाद. तो दोज आर वेरी फेमस प्लॉटिंग लाइब्रेरीज. और इसके साथ आप साइकिट लर्न या फिर टेंसरफ्लो के साथ काम करते हैं. एंड एक्चुअली आई वांट टू से समथिंग मोर अबाउट द टेंसरफ्लो पार्ट. सो इट्स नॉट लाइक टेंसरफ्लो इज आउटराइट यूजलेस, एंड इट इज नॉट यूजलेस रियली. मैंने बोला 80-20 का रेशियो है, बट जब आप पूरे दुनिया में स्केल करते हैं ये रेशियो, तो इवन अ 20% रेशियो इज अ लॉट. एंड टेंसरफ्लो इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ मॉडल्स. लाइक आपने मॉडल बनाया है, आप अपनी जुपिटर नोटबुक से बाहर नहीं जाओगे. बट हम अगर एप्लीकेशंस बना रहे होते हैं लार्ज स्केल पे, तो हमें मॉडल्स डिप्लॉय करने होते हैं, एंड फॉर दैट पर्पस टेंसरफ्लो इज द बेस्ट लैंग्वेज. सो या, दैट वाज अबाउट द बूट कैम्प. हमने शेड्यूल कवर कर लिया है ऑलरेडी, एंड विल बी सप्लाइंग यू गाइस द प्रॉपर नॉन ब्लर्ड वर्जन ऑफ दिस शेड्यूल. एंड या, अबाउट द क्विज पार्ट, हम सेशन के एंड होने से 10 मिनट पहले ही हर बार एक क्विज भेज देंगे, एंड उसके हिसाब से आप इवैल्यूएट होंगे. सो आई होप दिस पॉइंट वाज क्लियर. एंड अब अगर किसी को बूट कैम्प के बारे में अभी भी डाउट्स है, देन यू कैन जस्ट आस्क मी अप राइट नाउ. When we will appoint a person, or you can just ask in the group actually. We'll make sure to answer that. So कोई भी फ्री होगा तो वो आंसर कर देगा. Please feel free to like ask any doubts, and like don't hesitate at all. We want to create a welcoming environment for all of you, and I hope we can be useful to you in the future and the long term. We are not getting anything from it, so it is purely wholehearted venture from all of us at Nexus. And yeah, that will be it. Q&A and stuff again. किसी को कोई query हो, कुछ भी हो, they can just ask me anything right now. Okay, so okay, Brahmdeep, thank you. You are a very enthusiastic person. And yeah, Harjas is asking what basically includes classical machine learning. So classical machine learning is what used to work 15 to 20 years ago, like 10 to 15 actually. It's not a lot, but yeah, classical machine learning where you are working with tabular data. So एक second, actually I'll just let you. I will just screen share again. मेरा इंटेंशन नहीं था इसको एक्चुअली मशीन लर्निंग फोकस बनाने का, बट इट इज ओके. सो या, ओके. सो यू हैव दिस वेबसाइट, एंड इस पे हमारे डेटा सेट्स अवेलेबल होते हैं हमारे लिए. तो इन डेटा सेट्स में बेसिकली क्या हो जाता है, एक सेकेंड. ओके,
So what you see here is kind of a data set, and ये tabular data set होता है basically, जिसमें you can just imagine it as an Excel spreadsheet, and इसके ऊपर आपके पास कुछ models होते हैं जो specifically बहुत अच्छे काम करते हैं, and those involves linear regression or like support vector machines, k nearest neighbors, and supervised unsupervised machine learning, and then you have deep learning, जहाँ से आप बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स के साथ काम करते हैं। आई एम श्योर कभी ना कभी तो आप सभी ने न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में सुना ही होगा, बट या देयर इज दैट। तो इनमें कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं जो टोटली यूजलेस नहीं है, बट धीरे धीरे एलएलएम्स ने टेक ओवर कर लिया है इनको। तो these kind of algorithms really work good on numerical data, but they are limited in their scope. But yeah, so this is what I meant by classical machine learning. And classical machine learning के बाद then you move on to deep learning, and then you move on to like generative AI stuff, NLP, or like reinforcement learning, kind of big league skills here. So I hope that was helpful again. And moving on to Nishita's question, to make small projects or to make websites. Okay. Oh yeah, sure. When you're working with your first or second websites, it is perfectly fine to like just get started with YouTube tutorials. It is fine. I won't discourage it. But again, what I meant to say was कि you should आप लोगों को अपने आप को engage करना चाहिए कि आप focus कर सके, like proper अपना 100% दे सके किसी प्रोजेक्ट को बनाने में। एंड ट्रस्ट मी, किसी ट्यूटोरियल बनाए हुए प्रोजेक्ट से बहुत ज्यादा सीखने को भी मिलेगा आपको अपने आप बनाए हुए प्रोजेक्ट से, या फिर लाइक बहुत ज्यादा सीखने को भी मिलेगा, एंड लाइक द फीलिंग एट द एंड वुड बी रियली रियली ग्रेट एक्चुअली। एंड यू विल फाइंड आउट कि जैसे जैसे मैंने बोला था, अपने पैशन प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस करिए, अपने जो पैशन है उसके हिसाब से काम करिए। तो या like I said, अगर आपको प्रोजेक्ट्स और वेबसाइट्स बनाने हैं तो you can just Google stuff to find out. If you want to make a like custom navigation bar, then you can find it on Google. Like you can see what you want to have on your website. There is plenty of stuff available on documentation for things like this. It is okay to perfectly get help from YouTube if you're stuck, but I will just encourage you guys to actively think more, if that made sense again. So yeah, I suppose that is it then for the session. And again, I would like to thank every one of you guys who have joined me here today. And like, we still have 57 students here, so I think मैंने इतना बेकार तो नहीं करा है सेशन के बारे में. So yeah, we have good retention here. Thank you for joining us, and I really hope you guys can actively maintain the streak you guys have ongoing here. And that will be concluding our session for today, guys. If you have any doubts, please feel free to like ask them in the group. अगर group पे access नहीं है तो I will make sure your access will be open soon. Okay. Thank you for joining us today, guys. Have a good night, and really kind of look forward to having you guys in the next sessions. Also, like kind of feel free to fill out the form actually. Yeah, this one right here. So yeah. No, Karam, just there is no quiz today. It is just an introductory session. मैंने कोशिश करी थी things simple रखने की, and आगे जाके you guys will be learning a lot more than this from the other guys. So yeah. अभी आज के लिए कोई evaluation नहीं है. You guys will be evaluated on the next 5 sessions and the project. Okay, I hope that was clear. So yeah, good night, guys.